Hello बच्चों, let's read this question. The question says a black body is at a temperature of 5760 Kelvin. The energy of the radiation emitted by the body at wavelength 250 nanometer is U1, at wavelength 500 nanometer is U2, and at 1000 nanometer is U3. Wien's constant B is given. Which of the following option is correct? The key concept of this question is Wien's displacement law. तो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लो हमें क्या बताता है दैट लैम्डा इनटू टी इज कांस्टेंट where lambda is wavelength and t is temperature. So from this equation we can write that lambda is inversely proportional to t or lambda is equals to b into t where b is Stephen's constant जो हमें स्टीफन वीन्स कांस्टेंट सो वीन्स कांस्टेंट की वैल्यू हमें b जो है वो गिवन है. ओके, नाउ हाउ वी विल प्रोसीड. जो हमारी वेवलेंथ होती है इस कंडीशन को जो सेटिस्फाई करेगा बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी इज गिवन. सो इस इक्वेशन को जो सी वेवलेंथ जो है सेटिस्फाई करेगी वो हमारी मैक्सिमम वेवलेंथ होती है. सो लेमडा मैक्स इज इक्वल्स टू बी ओवर टी. Now we will put the values of b. B is given as 2.88 into 10 to the power 6 nanometer Kelvin. So 10 to the power 6 nm Kelvin over temperature which is 5760. So on solving this you will get 500 nm which is 500 nanometer. So the value which corresponds to 500 nanometer is maximum. तो मैक्सिमम हमारी वेवलेंथ अगर हम चेक करें तीन जो सिचुएशंस गिवन है 250 नैनोमीटर 500 नैनोमीटर एंड 1000 नैनोमीटर. So at 500 nanometer we are getting peak maximum value of wavelength. So that's why U2 is greatest. U2 जो होगा हमारा वो maximum होगा और जो बाकी सब होंगे U1 and U3 जो एनर्जी होगी वो कम होगी. So U2 is maximum. So from this we can conclude that U2 is greater than U1 और U3. तो U1 और U3 के हमें बीच में रिलेशन नहीं पता बट U2 will be greater than U1 and U3. Okay, so option number D is correct. I hope you understood it well. Best of luck for your future.